इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे। फिल वक्त बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी इक्तिसादी ताल्लुकात को नई जहद देने के लिए तारीखी कदम उठा लिया। रियाद में आला सतह की मुलाकात में दोनों ममालिक ने इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क के आगाज़ पर इत्तफाक किया है, जो तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन को फ़रोग़ देने की समत में अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान में मुलाकात 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। एलामिये में कहा गया कि इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों में शराकत को फ़रोग़ देना है। दोनों ममालिक ने तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सियाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर इत्तफ़ाक किया। बिजली के इंटरकनेक्शन, मनसूबे और तवानाई ताउन से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्तों पर भी गौर किया जा रहा है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक की क़यादत के उस विजन की अक्कासी करता है जो पायदार इक्तिसादी शराकत दारी और इलाकाई इस्तेहकाम पर मबनी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात का ये नया दौर न सिर्फ सरमायाकारी के मौके को वुसअत देगा, बल्कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते में तरक्की के नए अहदाफ हासिल करने में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। ये दौरे न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में अस्करी इत्तेहाद के फ़रोग़ का मज़र हैं, बल्कि पाकिस्तान के आलमी वक़ार में भी इजाफे का बाइस बनेंगे। तो ये सूरत हाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। ये दौरे न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में अस्करी इत्तेहाद के फ़रोग़ का मज़र हैं, बल्कि पाकिस्तान के आलमी वक़ार में भी इजाफे का बाइस बने हैं। तो आपको बताते चलें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। ये दौरे न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में अस्करी इत्तेहाद के फ़रोग़ का मज़र हैं, बल्कि पाकिस्तान के आलमी वक़ार में भी इजाफे का बाइस बन रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरा मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की। अरब क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन की यकीन दहानी कराई। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल का ये दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की एक मजबूत अलामत है। इन दौरों ने न सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई रवाबित को मुस्तहकम किया, बल्कि मुश्तरका सलामती के लिए नए रास्ते भी खोले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फाल अस्करी सफारतकारी ने दुनिया भर में पाकिस्तान के वकार को मजीद बुलंद किया है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की कसीरुल-जहती शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, क्या तफ़सीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ाद फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ज़ीशान सैयद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल के जिसके हवाले से उन्होंने अपडेट किया। पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात का चौथा रोज़ सालिसों और मेज़बानों के इसरार पर इस्तंबुल में मुज़ाकरात दोबारा शुरू। आज के मुज़ाकरात किसी नतीजे तक पहुँचने की आखिरी कोशिश थे। पाक अफगान मुज़ाकरात के 3 अदवार बेनतीजा रहे। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात पर भारतीय और अफगान प्रोपेगेंडा मुहिम उरूज पर। भारतीय और अफगान एक्स हैंडल्स मुज़ाकरात नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने में मसरूफ़। अफगान ट्रोल्स कलदम गिरोह फितनाल ख्वारिज को मखसूस इलाका करार देने के झूठे दावे कर रहे हैं। अफगान तालिबान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां देते रहे। भारतीय ट्रोल हैंडल्स अफगान ट्रोल्स को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में भरपूर सपोर्ट दे रही हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान की जानिब से दरियाए चित्राल पर मुतअद्दिद डैम बनाने के मंसूबे सामने आए। अफगान तालिबान समेत तैयारा शिकन गन्स की तनसीब का भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात पर भारतीय और अफगान प्रोपेगेंडा मुहिम अरूज पर। भारत और अफगान एक्स हैंडल्स मुज़ाकरात नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने में मसरूफ़ है। अफगान ट्रोल्स कलदम गिरोह फितनाल ख्वारिज को मखसूस इलाका देने के झूठे दावे कर रहे हैं। अफगान तालिबान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां देते रहे। भारतीय ट्रोल्स हैंडल्स अफगान ट्रोल्स को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान की जानिब से दरिया चित्राल पर मुतादिद डैम बनाने के मंसूबे सामने आए। अफगान तैयारा शिकन गन्स की तनसीब का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा देने और असम्बली तहलील करने से इनकार कर दिया। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। कहते हैं किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आएँ। अकेला आया था, अब दोस्त साथ हैं, उनके बगैर नहीं जाऊंगा। जब तक इख्तियार है फ़राइज़ अंजाम दूंगा। वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने भरा हुआ ख़जाना खाली नहीं किया। जिस घर में जन्म लिया अपनी खातिर उसे आग नहीं लगाऊंगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज आने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में। वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे हैं। Ever since our inception, 78 years, we have made, very honest, mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution, has been completely digitized. We are attacking corruption with full might, but then Rome was not built overnight. We are undertaking industrial reforms. We have a youth bulge. 60% of our population is very young, and in Chinese parlance, it's a challenge as well as opportunity. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. While we are doing all this, we are an agrarian economy. My friend, ladies and gentlemen sitting here, Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change, and for no rhyme or reason, no fault of ours, our emission is less than a fraction of 1%. And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. And we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Large swaths of our land was underwater. Crops were destroyed. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then you come back down, going up the ladder and then come back down. This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared
by the global humanity to come to the rescue of suffering humanity. Otherwise, this lopsided system will provide devastating results. Therefore, I would like to say that if humanity has to move forward, it has to move forward in unison, share its bounties and grievances together, move forward and share modern technologies with those countries which can use those technologies and grow their production, whether it's agriculture, industry, etc., and employment. This is how I feel, but all said and done, we are resolved by the grace of God. We will turn Pakistan as one of the most growing countries through hard work and untiring efforts, collecting our youth, our natural resources and our strength, putting them together and make our country stand in the community of nations like a very honorable country. Thank you for your passion, Prime Minister. Short answer to my short question. To be sure that your citizens are convinced that you are going in the right direction in terms of technology and AI, because everyone and the young generation are obsessed now by technology and AI. What are you doing in terms of global cooperation and also what you are doing on technology to be sure that the young generation will benefit from this new trend of AI technology to be inclusive? You are a great tech nation. Yeah, very good question. I think Pakistan is already set and we are moving speedily towards technology and AI. Now, AI, ladies and gentlemen, we must all understand, has its huge benefits and also disadvantages. I think the global north should come and sit on the table who have already achieved a lot of progress in AI, that how AI technology can best be used to make it productive, make it very positive, and have synergy between global north and global south. For example, agriculture. If we deploy AI technology in agriculture, a country like Pakistan and those representing global south countries, this agricultural economy will be completely transformed. Similarly, in industry. And we are at the moment with AI, with technology, with IT, and using whatever means we have at our disposal, but to create hubs, to create data centers require huge investment. And therefore, global north and global south should sit down and come to an agreement whereby we should have equitable distribution of resources, to have egalitarian economy, I mean, for the north and for the south. This is how we have to have shared destiny. Otherwise, I don't think we will be able to do justice to ourselves and to the entire global village. Prime Minister Rama, you're not just a political leader. I think you almost became, by coincidence, political leader, but you are a great artist. And your creations are amazing. And I was so privileged to visit your office a few months ago in Tirana, and it's almost a museum. So what do you think the role of culture, the role of creativity, art, imagination, technology can play to bring nations again in the right direction and to inspire the people today? Because I think people need to be inspired. Thank you very much. And let me share with you first impression of this table. I'm not used to see Johnny like that. I'm used to see him in the White House bringing cups of the world, of the clubs. And here he comes with a bowl. So bowls for us, cups for the White House. You know, the emperor of the football is here and is one of the very significant signs, I guess, what's going on in this country. Who would have imagined to have in this country only 10 years ago
this amazing gathering, and Gianni Infantino himself being here, not just as a tourist, but as someone who is representing the largest human movement and advocating for 20. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तौहीन अदालत की पटिशन दायर कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप आइन की बालादस्ती कायम करें। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा, जिस दिन इंसाफ होगा बानी जेल से बाहर होगा। मेरी मुलाकात ना होने का यह मतलब नहीं कि मुझे बानी का पैगाम नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो हम जो हैं अपनी अदलिया को, अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ये पैगाम दे रहे थे कि आपके साथ आवाम खड़ी हैं, आपके साथ हमारे सारे वकला खड़े हैं, तो आप बराए मेहरबानी आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, मुल्क में इंसाफ फराहम करें, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस दिन इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आज से आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर। बाबर आजम के मद्दा अपनी पसंदीदा टीम को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। इस वक्त स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। बिल्कुल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होने जा रही है। आज पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। रावलपिंडी में इस वक्त शायकीन क्रिकेट का खासा हजूम हमें स्टेडियम के बाहर नजर आ रहा है, जो स्टेडियम में जाने के लिए बेताब है और मैच देखने के लिए भी बेताब है। बाबर आजम के फैंस हमें काफी नजर आ रहे हैं, चाहूंगी उनसे बात भी करूं। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे और बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है, उसका कमबैक हुआ है। हमने टिकट लिए थे लेकिन अभी स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ था, तो फिर सरप्राइज कमबैक हुआ बाबर आजम का। बिल्कुल खुश हुए। बिल्कुल, यहाँ पर बाबर आजम के आने पर तो खुश है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी शायकीन क्रिकेट है, उनसे भी बात करूंगी और पूछूंगी कि आज किस प्लेयर से उम्मीदें लगा रखी है, क्या कहेंगे किस प्लेयर से उम्मीदें हैं? जी, आज बाबर आजम के लिए आए थे और साहिबजादा फरहान के लिए। साहिबजादा फरहान और बाबर आजम से बहुत उम्मीद थे कि वो आज परफॉर्म करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है वो पुरजोश भी है, दुआगो भी है, और साथ ही साथ बाबर आजम के लिए ज्यादा दुआएं की जा रही हैं कि आज का जो मैच है वो पाकिस्तान अपने नाम करेगा। साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार कर दिया। साबिक कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत के एवज शराइत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रख दी। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने T20 स्क्वाड से हटाने की वजह पूछ ली। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ चिराग बलोच से। जी चिराग, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के वनडे टीम के कप्तान जो साबका कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ज़राए की जानिब से बताना है कि मोहम्मद रिजवान ने ताहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि रवां साल के थे उसके ऊपर दस्तखत करने से मना कर दिया है, और साथ में उन्होंने कुछ शराइत जो है वो सामने रखी। उनमें से एक जो वजह है, शर्त है, वो सामने ये आई है कि कौमी T20 स्क्वाड में उनको क्यों हटाया गया, इसकी वजह जो है वो पीसीबी बताए। ये ज़राए की जानिब से बताना है, और साथ में ज़राए की जानिब से ये भी बताना है कि रिजवान के अलावा तमाम तर खिलाड़ी जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। सिर्फ रिजवान ही बाकी हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दस्तखत करना बाकी है। मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने बी कैटेगरी जो है वो दी थी, जो कि 25-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे, और टोटल 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में CCD पुलिस के 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुल्जिमान हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। 3 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से और 3 क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए। हलाक मुल्जिमान की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत दीगर के रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। 20 बरसों से कराची के अवाम को झटके देने वाली के इलेक्ट्रिक खुद झटके खा रही है। उनका टैरिफ क्या कम हुआ, ये ब्लैकआउट की धमकियां देने लगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मौलाना जफर खान ने सिंध हुकूमत से चालान सिस्टम पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं कामरान सुहेल।
इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी जमात इस्लामी की जद्दोजहद का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक 20 बरसों से कराची के अवाम को बिजली के झटके दे रहा है। अब जब उनको झटका लगा तो धमकियों पर उतर आए। मुनिसलवी शहर को अंधेरे में डबोने की धमकियां दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक जो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा माफिया बनकर उभरा है, के इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब टैरिफ में कमी के बाद धमकियों पर उतर आए हैं, लोड शेडिंग की धमकी दे रहे हैं और इसी तरह ब्लैक आउट की धमकियां दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था हुकूमत सहूलत दे नहीं रही और चलान आलमी मेयार के मुताबिक कर रही है। ई चलान सिस्टम का असर नौ जायजा लेकर नजर सानी की जाए। कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें हैं और जुर्माने आलमी मेयार के। अगर कोई वायलेट करता है, रॉन्ग साइड पर आता है, उसके अलग आपने जुर्माना लगाया है, आप जुर्माना जरूर लगाएं। लेकिन ये न्यू केस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।